Good evening, everyone. Merry Christmas, all. I understand it is not a very Merry Christmas for chartered accountants and tax professionals, as we are currently facing so many due dates on 31st of December 2020. Apart from due dates, there are so many changes that will be taking place with effect from 1st of January 2020, be it e-invoicing for large taxpayer, that is 100 crore plus turnovers, or new scheme of the return filing system, that is QRMP scheme. It is also coming from 1st of January 2020. And on 22nd of December 2020, the government came out with the 14th amendment to their GST rules, which has again increased some burden of the taxpayers. And the objective of today's discussion is to discuss on two important aspects of 14th Amendment rules. Basically, Rule 86B, which has been introduced into the GST rules, and the amendment to Rule 36.4. So I will be using my presentation for that. Just give me a second. So out of the entire amendments on 22nd of December, I will be focusing on two major amendments, 86B and 36.4. उसके अलावा बहुत सारी amendments और भी आई हैं, रजिस्ट्रेशन की एस्पेक्ट को लेके, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेके, ई-वे बिल के अंदर जो वैलिडिटी थी, इट वाज फर्स्ट बेस्ड ऑन 100 किलोमीटर्स पर डे, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 200 किलोmeters per day. So there have been many other changes also, but out of these so many changes, these two are very important and are likely to impact our professional way to file the return, or the possibility of increased litigation has now tripled, or I should say 4 times, has multiplied it to 4 times. The first and the very basic objective of these two amendments, that is 86B and 36.4, is clearly visible that there is a trust deficit between the government and the taxpayer. The government is not trusting the taxpayers nowadays. They are just thinking that every taxpayer, every businessman is trying to evade taxes. And because of this mindset, and actually this mindset is very wrong. There can be 2 players, 3 players, 300 players. We have more than 1.25 CR registration. एक 125 crore GST registration में से, if a handful of taxpayers are using the law to their benefit, they are issuing bogus invoices, I agree the government should take the step towards controlling those things. But at the same time, you cannot burden more than 1.25 crore taxpayers in a compliance burden or in a reconciliation mess. So the entire crux is that there is a trust deficit between government and the taxpayers, and the government should try to understand that merely adding on restrictions does not reduce that trust deficit. And secondly, that I will discuss that when I will be discussing 36.4. So starting on with Rule 86B. Rule 86B will be applicable from 1st of January 2020. हम सब लोगों ने 86B के बारे में थोड़ा बहुत सुन लिया, that 1% cash payment करनी है, 1% cash payment करनी है. So I already have some credits lying with me, but still the government is saying that you have to pay minimum 1% of the tax through your cash ledgers. So my total output is 100. My input tax credit is 120. Even in those circumstances, the government has said that you will have to pay 1% through your cash ledgers. Now the issue arises that on which categories of taxpayer this Rule 86B will be applicable. So it is very clear that it is not applicable to all the taxpayers. It is not applicable to you and me. It is applicable to a specific category of taxpayers. So the rule says that you should not be using the amounts available in your credit ledgers to discharge output tax liability in excess of 99%. So maximum credit that can be used to pay output tax is 99%. Understood. Now, what are those categories to which this rule is not applicable? So we are understanding the negative list.
पहले उन्होंने सबको कवर किया, उसके बाद उन्होंने 5 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर इसमें से बोला दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू 5 कैटेगरीज. एंड व्हिच आर दोस 5 कैटेगरीज? द फर्स्ट कैटेगरी इज that during a particular month in which this compliance has to be done, my total turnover reduced by exempt supplies and zero rated supplies is less than 50 lakh rupees, then this provision is not applicable. Simple words के अंदर, if my turnover is more than 50 lakh rupees in a particular month, so this provision is applicable on a monthly basis. एक महीना मेरी टर्नओवर 60 लाख रुपए है, 86B is applicable. Second month my turnover is 40 lakh rupees, 86B is not applicable. So every month you have to see what is your aggregate turnover for that particular month, and if the turnover exceeds 50 lakh rupees, अभी इसके ऊपर हम illustration भी करेंगे. If the turnover exceeds 50 lakh rupees, then the provision is applicable, and when the turnover is less than 50 lakh rupees, this provision is not applicable. So in simple words, we can say that this provision is not applicable to small category of taxpayers. 50 lakh rupees per month on an average, अगर 12 महीने continuous if we say, it means an average turnover of 6 crore per annum, जिसको 12 महीने applicable होगा. So I can also say that mostly the taxpayer which are covered under QRMP scheme, quarterly return, monthly payment, जो 1st of January से applicable होती है. So most of those taxpayers will be out of rule 86B. There can be a possibility 2 महीने में 50 लाख टापा था, so they will have to abide by this rule. But ये तो पहला exception है. मेरे पास 5 exceptions है. So first exception is that in a particular month my turnover is less than 50 lakh rupees, rule 86B is not applicable. We will be discussing these. The deliberation on this point will also be taken off with the help of an example. Second, if that particular person has paid an income tax of rupees 1 lakh or more than 1 lakh rupees for the past 2 consecutive years. So if we are standing in 2020-21, तो जो पिछली 2 रिटर्न्स हैं जिनकी ड्यू डेट खत्म हो चुकी है, if I have paid taxes amounting to rupees 1 lakh or more, then 86B is not applicable. या in simple words मैं बोलूं, since you are paying a decent amount of income tax, the government is ready to trust you कि आप जो credits ले रहे होगे वो genuine credits ले रहे होगे, you are not involved in the bogus transaction. So यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पहली कैटेगरी में एक छोटी कैटेगरी स्मॉल टैक्सपेयर्स को बर्डन ना करते हुए उन्होंने बोला आप ले लीजिए. जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो तब आपको हमने पहली रिस्ट्रिक्शन दे दी. अगर आपने इनकम टैक्स 1 लाख रुपए का दे रखा है, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स कंपनी के केस में डायरेक्टर भी कवर्ड है, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स भी कवर्ड है. अगेन वी विल डिस्कस दिस पॉइंट एट लेंथ एट अ लेटर स्टेज. अभी बेसिकली हमें क्या देखना है कि अगर एक कंपनी की टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा थी एक पर्टिकुलर मंथ में, 86 भी अट्रैक्ट हो गया, बट उसने पिछले 2 सालों में 10-10 लाख का इनकम टैक्स भरा हुआ है, 86B इज नॉट एप्लीकेबल. सो जितना ये बड़ा लग रहा था उतना बड़ा नहीं है. हाँ, लॉस मेकिंग कंपनीज कभी इनकम टैक्स पे नहीं करती हैं, तो देन डेफिनेटली 86B मे कम इनटू द पिक्चर. द थर्ड एक्सेप्शन इज दैट if you have taken refund from the department, refund of input tax credit. Input tax credit के 2 केसेस में रिफंड मिलते हैं. Exports without payment of taxes, that is zero rated supplies without payment of taxes, जिसमें मुझे inputs और input services का मिलता है. And the second category is inverted duty structure. So if I have taken refund from department and the amount of that refund is more than 1 lakh rupees, even in those situations rule 86B is not applicable. यानी अगर मैं रिफंड ले रहा हूं, 1 लाख से ज्यादा का रिफंड पिछले साल में ले चुका हूं, तो 86B मेरे पूरे साल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. यानी फॉर 2021 जो 1st of January से एप्लीकेबल हो रहा है, अगर मैंने 19-20 में 1 लाख से ज्यादा का रिफंड लिया हुआ है, ITC का रिफंड लिया हुआ है, even then rule 86B is not applicable. Again, since you have filed an application for refund, government has received certain data from you, they must have verified that data, only after that the refund was issued to you. So they have now a trust on you
एक ट्रस्ट फैक्टर जो डेफिशिट बाकी सारे केसेस में, यहाँ पे वो मिटिगेट हो गया। क्यों? आपने उनके पास प्रोसेसिंग के लिए गए थे, आपने उनको अपना डाटा शेयर किया हुआ है। सिंस यू हैव ऑलरेडी शेयर सर्टेन डाटा, तो द गवर्नमेंट फील दैट यू आर अ ट्रस्टवर्दी टैक्सपेयर, सो 86B इज नॉट एप्लीकेबल। Fourth category, and an interesting one. It says that during financial year, it can be 2021, 21, 22, or any other financial year, if you have already paid more than 1% in cash up to that cumulative period. For example, हमारा January से 86B is applicable. From April 2020 to December 2020, अगर इन 9 महीने के अंदर मैंने ऑलरेडी 1% से ज्यादा का कैश पे कर रखा है, मेरी टोटल आउटपुट लायबिलिटी का 1% से ज्यादा कैश पे कर रखा है, इवन देन 86B इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ, इसमें जनवरी इंक्लूड करके फिर 1% कैलकुलेट करना है। फ्रॉम टर्नओवर फ्रॉम अप्रैल टू जनवरी, टोटल टैक्स पेबल ऑन दैट टर्नओवर, 1% ऑफ दैट tax, if you have already paid that in cash, then again you are not required to comply with rule 86B. क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी 1% से ज्यादा कर चुके हो। तो हमारा 86B लाने की रीजन क्या है कि आप लोग चोरी ना कर रहे हो। Since you have already paid more amount than 1%, then you are not required to pay in a specific month, अगर उस मंथ में ऑलरेडी पहले से आपका एक एक्सेस चल के आ रहा है। एंड लास्टली, इफ यू आर अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, आप गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो, पीएसयू हो, लोकल अथॉरिटी हो या स्टैट्यूटरी बॉडी हो, तो इन सारे केसेस के अंदर आप लोगों को 86B इज नॉट एप्लीकेबल। इन सिंपल वर्ड्स, जहां पे छोटा टैक्स पेयर है या ट्रस्टेड टैक्स पेयर है, जिसको वो रिलाय कर सकते हैं, जिनके ऊपर वो विश्वास कर सकते हैं, उन सारे केसेस को उन्होंने बोला 86B इज नॉट एप्लीकेबल। सो छोटे टैक्स पेयर जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती थी, वो कार्व आउट हो गए। जहां पे आप डिसेंट इनकम टैक्स पे कर रहे हो, 1 लाख रुपीज इज नॉट अ वेरी बिग सम फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एंड फॉर दैट मैटर इवन एनी बिजनेस कंसर्न हु इज हैविंग अ डिसेंट टर्नओवर। 5 करोड़ से नीचे वाले तो पहली बार हो गए, क्योंकि लगभग 50 लाख रुपीज पर मंथ की टर्नओवर आएगी नहीं। 5 करोड़ रुपए के ऊपर कोई भी कंपनी अगर रन कर रही है, एंड आई से कि वो बेयर मिनिमम से उसकी टर्नओवर 5 करोड़ ही है, और बेयर मिनिमम वो 5% का जीपी और एनपी डिस्क्लोज करता है, दैट इज 25 लाख रुपीज, एंड इनकम टैक्स ऑन दैट 25 लाख रुपीज विल बी सफिशिएंटली मोर देन 1 लाख रुपीज। सो अगेन वो कैटेगरी भी कार्व आउट हो गई। See, I am not justifying rule 86B. Now, since the rule is already applicable, it might be challenged in the high courts, but we have to understand मेरे कौन से टैक्स पेयर्स को इम्पैक्ट कर रहा है। तो मेरे छोटे टैक्स पेयर्स पे नहीं कर रहा, मेरे जो 1 लाख से ऊपर का टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा। तो देयर आर ओनली अ सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स। तो मेरे को क्या देखना, आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पास लॉस वाले कितने केसेस है, या जिनकी 5 करोड़ से ज्यादा और लॉस आ रहा है, शायद वो केसेस के ऊपर रूल 86B एप्लीकेबल हो। और अगर वो लॉस में है तो ऑब्वियसली उनके पास तो क्रेडिट पहले से पड़ा होगा। लॉस का मतलब क्या है, माय इनकम इज लेस देन माय एक्सपेंडिचर्स। अगर इनकम एक्सपेंसेस से कम है तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट माय इनपुट विल बी मोर देन माय आउटपुट, और वो एक्यूमुलेटेड पहले से पड़ा। सो दोज आर द क्लाइंट्स वेयर वी हैव टू फोकस नाउ कि 86B इन कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। नाउ स्टार्टिंग ऑन विद द इंडिविजुअल आइटम्स, ये जो हमने 5 डिस्कस करी, इनको एक बार इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा सा और डेलिब्रेट करते हैं। पहली कैटेगरी के अंदर वो क्या बोलता है कि आप टोटल सप्लाई ड्यूरिंग दैट मंथ, चाहे टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, सारी कैटेगरी आप यहां पे ले लीजिए। आउट ऑफ दैट टोटल सप्लाई आप सबसे पहले एग्जेम्प्ट उसमें से हटा दीजिए। टोटल माइनस एग्जेम्प्ट माइनस जीरो रेटेड। जीरो रेटेड मींस वेदर इट इज एक्सपोर्ट और SEZ, ये दोनों हटा दीजिए। Now, if the total value exceeds 50 लाख रुपीज, अगर ये जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी इसके बाद में मेरी टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, then yes, rule 86B will be applicable subject to the condition that you are not covered in the balance 4 category. वो balance 4 इसीलिए पढ़ना पड़ रहा था, पहले 5 इसलिए पढ़ी ताकि एक ब्रॉड ओवरव्यू हो कि ऐसा नहीं है कि इनवेरिएबली सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा, एक सिलेक्टेड कैटेगरी पे एप्लीकेबल है। मेरी 50 लाख से ज्यादा है, नाउ आई विल सी क्या मैं इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा पे कर सकता हूं। यस, आपको कुछ नहीं करना, 86B नॉट एप्लीकेबल। 50 लाख से ज्यादा है, क्या मुझे 86B एप्लीकेबल है, मैंने पिछले साल 4 लाख का रिफंड लिया, नॉट एप्लीकेबल।
86B मैं ऑलरेडी 3% से ज्यादा कैश में पे कर चुका हूं इस साल, क्या मुझे 86B एप्लीकेबल है? नहीं है। सो इट इज नॉट वेरी वाइड। हाँ, पहली कंडीशन क्या है? 50 लाख की टर्नओवर। वो मीट होने के बाद मेरे को 4 चीजें चेक करनी है। पहली चीज क्या चेक करनी है? क्या मैं इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा देता हूं? हाँ। क्या मैंने रिफंड पिछले साल 1 लाख से ज्यादा का लिया है? क्या मैंने ओवरऑल इस साल में 1% से ज्यादा का कैश से पे कर दिया है? एंड लास्टली, क्या मैं गवर्नमेंट की बॉडी हूं, एक लोकल अथॉरिटी हूं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी हूं या पीएसयू? अगर मैं इन चारों में कवर होता हूं, 86B इज नॉट एप्लीकेबल। इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये लिमिट मेरे को 50 लाख रुपीस की हर मंथ चेक करनी है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार ही कर दी उसके बाद नहीं करनी। यू हैव टू चेक दिस अमाउंट एवरी मंथ। इट माइट बी पॉसिबल 1 महीना एप्लीकेबल है, 6 महीना नहीं है, फिर 2 महीने एप्लीकेबल है, फिर 4 महीने नहीं है। सो यू हैव टू चेक दिस एप्लीकेबिलिटी, दिस टर्नओवर एवरी मंथ। एंड लास्टली, वी कैन समराइज दिस एज दैट इट इज अ बेनिफिट टू अ स्मॉल कैटेगरी टैक्सपेयर। बट स्टिल देयर इज वन इशू दैट आई फील कि इस कैटेगरी में मिस आउट हो रहा है, या द गवर्नमेंट हैज नॉट रियलाइज्ड इट। नाउ लेट मी ब्रिंग इट विद एन एग्जांपल। गवर्नमेंट सेड, मेरे को क्या चेक करना है कि मेरी टोटल सप्लाईज जो है अगर 50 लाख से ज्यादा है, माय टैक्सेबल सप्लाईज आर 70 लाख रुपीज। एंड अज्यूम करो जो बाकी 4 कंडीशंस है, इनकम टैक्स वाली, रिफंड वाली, गवर्नमेंट वाली और 1% वाली, वो मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है। My turnover in January 21 is 70 lakh rupees, taxable turnover. My exports with payment of tax is 30 lakh rupees. My gross turnover is 1 crore. मेरी gross turnover 1 crore है। 86B के लिए 70 lakhs है। 86B is applicable. I am assuming rest of the 4 conditions are not applicable. The total tax payable on it is 18 lakh rupees. 1 crore रुपए के ऊपर 18%, 18 lakhs. Exports are with payment of taxes. Total tax payable is 18 lakh rupees. Now the question arises, if I have to comply with Rule 86B, then whether I have to pay 1% even on the export turnover. 30 lakh rupees के ऊपर 540 का GST बनता है. On this export turnover of 30 lakh rupees, GST payable is 540. And now the issue arises, आपने बोला 86B की एप्लीकेबिलिटी के लिए आप इसको हटा दीजिए, 86B की एप्लीकेबिलिटी के लिए इसको हटा दीजिए। वंस 86B इज एप्लीकेबल, तब इस एक्सपोर्ट टर्नओवर का क्या करना है? वेदर आई हैव टू पे टैक्स ऑन दिस 540, इसका 1% मुझे कैश में पे करना है। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर मुझे कैश पे करना है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ ये बोला 86B एप्लीकेबल करने के लिए हटा दीजिए। उसके बाद टोटल लायबिलिटी का, आई एम गोइंग बैक टू द मेन provision. Notwithstanding anything contained in these rules, the registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax. And वो 540 जो एक्सपोर्ट पे है, that is your output tax. यानी 86B अप्लाई कब नहीं करेगा? अगर 50 लाख से कम है। एक बारी वो प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया, जैसे इस केस के अंदर प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया, अब इशू ये आता है कि क्या 5,40,000 के ऊपर भी 1% कैश पे करना मैंडेटरी है? टू माय अंडरस्टैंडिंग yes. To my understanding, yes. If any one of you have a different thought, you can comment it on the relevant on the YouTube comment section, and I will try to deliberate that at the end of the session. And if required, we will also bring the notification for other people. So even in case of an exporters with payment of taxes, this 540 will be applicable. यानी इसका 1% पे मुझे पे करना पड़ेगा. That is effectively 5,400 rupees. Though the amount is not much, 5,400 rupees only. But the issue is I already have accumulated credits. It could even be possible कि मेरे को तो refund भी नहीं मिलता उसका. Accumulation हो रहा है लेकिन refund नहीं मिलता. अब मेरा accumulation 1% से और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मेरे पे 86B applicable हो गया. सेकेंड कंडीशन थी कि मैंने 1 लाख से ज्यादा का टैक्स पे किया है पिछली 2 रिटर्न्स के अंदर। अब ये जो पर्सन वर्ड है, इसको उन्होंने एक्सटेंड कैसे किया? उन्होंने बोला ये अगर प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर का मतलब क्या हो गया? आई एम अ प्रोपराइटर ऑफ माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, माय टोटल टर्नओवर फॉर माय सीए बिजनेस इज से 50 लाख रुपीज। मेरी टोटल टर्नओवर यहां से 50 लाख रुपीज आ रही है।
तो मेरा तो 1 लाख से ऊपर ऑलरेडी टैक्स बन रहा है XYZ रीजन की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई एक इंडिविजुअल है जिसकी इंटरेस्ट इनकम की वजह से उसका इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा बन रहा है, उसकी एक सेल ऑफ गुड्स की प्रॉपर्टी, उसने एक प्रॉपर्टी सेल करी, कैपिटल गेन था, उसकी वजह से 1 लाख से ज्यादा हो गया। तो यानी प्रोपराइटर की इनकम टैक्स रिटर्न की वजह से अगर आपका ग्रॉस इंक्रीज हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। एचयूएफ के केस में अगर एचयूएफ 1 लाख से ज्यादा पे कर रही है, वेरी गुड। अगर कर्ता भी कर रहा है तो भी आपको ये रिलीफ मिल जाएगा। यानी एचयूएफ के केस में पर्सन तो एचयूएफ हो गया, पर्सन के साथ साथ उसके कर्ता को भी कवर कर दिया। सो अगर एक एचयूएफ खुद 20,000 रुपए का टैक्स पे कर रही है, लेकिन उसका कर्ता 4-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए टैक्सेस पे करता है पर एनम के, तो उस एचयूएफ को भी रिलीफ मिल गया। 86B इज नॉट एप्लीकेबल। एक कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर्स है, एंड दोज डायरेक्टर्स आर पेइंग टैक्सेस ओवर एंड अबव 1 लाख रुपीज पर मंथ पर एनम, यानी अपनी रिटर्न में 1 लाख से ज्यादा का टैक्स पे कर रहा है, उस कंपनी को भी 86B एग्जेम्प्ट हो गया। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म कोई टैक्स पे नहीं कर रही, लॉस में है, लेकिन पार्टनर्स अपना 1 लाख से ज्यादा का टैक्स पे कर रहे हैं, उसको भी ये एग्जेम्पशन मिल गई। यानी इन अदर वर्ड, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटिटी है, जो बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस कंसर्न है, वो बिजनेस कंसर्न और द पर्संस हु आर कंट्रोलिंग दैट बिजनेस कंसर्न, यानी द कंसर्न और द पर्संस हु आर कंट्रोलिंग द कंसर्न, if their tax payment exceed 1 lakh rupees per annum, उन सारे केसेस के अंदर this provision is not applicable. Rule 86B is not applicable. This is a very good relief जो उन्होंने दिया है, कि यहां पे उन्होंने एक लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर भी इंश्योर कर लिया कि अगर डायरेक्टर्स पे कर रहे हैं या पार्टनर्स पे कर रहे हैं या कर्ता पे कर रहा है, even then 86B is not applicable. We trust you. We trust your organization based on that managing director और those partners. पार्टनर्स के अंदर उसने मिनिमम 2 पार्टनर्स बोल दिए। बस इसमें सिर्फ एक कंसर्न रह गया कि एक नया सेटअप है। आज कोई यंग जनरेशन 22-23 साल के अगर कोई यंग बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना कोई बिजनेस कंसर्न, उनकी तो कोई रिटर्न पहले कभी गई नहीं। दिस इज अ न्यू बिजनेस, उसमें भी लॉसेज होने के बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है। Then they will have to comply with Rule 86B when they exceed the parameter of 50 lakh rupees. हाँ, पहले दिन ही 50 लाख तो पहुंचेंगे नहीं, 50 लाख रुपीस की टर्नओवर भी पहुंचने में टाइम लगता है। So the government has tried to compensate it on some or the other grounds कि ठीक है, आप पहले थोड़े से बड़े हो जाओ, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे फिर अगर आप अब मेरी कंप्लायंस करोगे 86B की, 50 लाख से ऊपर आ गए हो, now you have a decent turnover, so now you can comply with 86B अगर आपके पास और कोई कंडीशन नहीं है। But the government should think about this कि जो नए सेटअप्स हैं उसके अंदर इसको और कैसे रिलैक्स डाउन करा जा सकता है। थर्ड कैटेगरी, मैंने अगर प्रीवियस ईयर के अंदर 1 लाख से ज्यादा का रिफंड लिया हुआ है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, रिफंड कैन बी ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज और ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, क्योंकि माय फाइल हैज ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड बाय द डिपार्टमेंट, they have already verified my major credits. मैंने पिछले साल लिया, there is a very high possibility मैं इस साल भी आपके पास रिफंड लेने आऊंगा। So the government feel that they are coming back to me, they are getting their accounts verified through me, so I can trust these categories, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। And the fourth category that we have already discussed कि for example मैं 21-22 की बात कर रहा हूँ, मैंने अप्रैल के अंदर ही से 50 लाख की टर्नओवर थी, there was no input. My turnover was 50 lakh rupees and there was no input. I have paid 9 lakh rupees. I have paid 9 lakh rupees as output tax. And that 9 lakh is almost 18%. यानी अगले 18 महीने तक अगर मैं कंसिस्टेंटली 50 लाख की टर्नओवर रखता हूं, मुझे पे करने की नीड नहीं है, बट द लिमिट इज फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल टू मार्च आपको चेक करना है कि क्या आपने 1% ऑलरेडी पे कर रखा है उस कट ऑफ मंथ तक। इफ यस, you are not required to pay 1% in that particular month. अब एक एग्जाम्पल से पहले, इस पूरे प्रोसेस के बाद, यानी मेरी टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, ना मैंने इनकम टैक्स पे किया हुआ है, ना मैंने रिफंड लिया हुआ है, आज तक अभी कैश से पे नहीं करा है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, आई एम अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, माई परचेजेज आर एट द रेट ऑफ 18% एंड 28%। मेरा सीमेंट स्टील आ रहा है 18 और 28 पे,
My output is 12% because I am supplying my goods, my services to government, which is chargeable to tax at the rate of 12%. So मेरे पास तो हमेशा सरप्लस खड़ा रहेगा, और मैं लॉस भी कर गया ड्यू टू कोविड, मेरा लॉस भी आ रहा है, या पहले भी लॉस चल रहा था, रिफंड मुझे मिलता नहीं क्योंकि इट इज नीदर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नॉर एक्सपोर्ट्स। तो थर्ड कैटेगरी खत्म होगी। मैं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हूं नहीं, वो खत्म होगी। आज तक कभी कैश से पे ही नहीं किया क्योंकि हमेशा सरप्लस क्रेडिट होता है, एंड एज्यूम किया इनकम टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं है। बट मेरा केस तो इतना फिट केस है कि इसके ऊपर मेरी कैश पेमेंट होनी नहीं चाहिए। इन ऑल दीज सिचुएशंस द कमिश्नर and the person authorized by him have been empowered that they can remove this restriction on a case to case basis after having their satisfaction। अगर उनको लगता है कि हाँ ये फिट केस है कि यहाँ पे मैं 86B को रिलैक्स कर सकता हूं, तो द कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम कैन गिव यू अ रिलैक्सेशन थ्रू 86B। यानी 5 तो लॉ में प्रोवाइड की टर्नओवर, 1 लाख से ज्यादा का टैक्स, 1 लाख से ज्यादा का रिफंड, 1% ऑलरेडी पे कर रखा है उस पूरे साल के अंदर, और लास्ट कंडीशन गवर्नमेंट का ही कोई यूनिट हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो, लोकल अथॉरिटी हो। इन 5 के बाद उसके बाद भी अगर कोई केस फिट केस बचता है तो ही कैन अप्रोच द कमिश्नर दैट सर माय केस इज अ फिट केस एंड आई शुड बी गिवन अ रिलैक्सेशन अंडर रूल 86B। वो रिलैक्सेशन हम लोग एक्सेप्ट, मतलब कमिश्नर से लेके अगेन वी कैन कम आउट ऑफ दिस एंटायर सिनेरियो। सर इशू कहां पे आता है? जहां पे 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए की टर्नओवर है, वहां पे इशू नहीं आता। Assuming my turnover is 100 crore rupees, my tax payable is 18 crore rupees, and that 1% of 18 crore is also 18 lakh rupees. I'm already a loss making company, तभी तो इनकम टैक्स नहीं भर रहा हूं। उस लॉस मेकिंग कंपनी के पास सरप्लस क्रेडिट होते हुए भी 18 लाख का कैश फ्लो का हिट होता है। वो सारे केसेस अपना कमिश्नर को प्रोसीड करें एंड आस्क द कमिश्नर टू गिव देम अ रिलैक्सेशन फॉर रूल 86B। So this was the theoretical aspect of the entire rule. Now let us take an example. My total output turnover was 60 lakh rupees. C और S में मैंने अलग अलग लिखे, but it is only 60 lakh rupees. And under IGST my turnover was 40 lakh rupees. Gross turnover was 1 CR. Intra 60, inter 40. My output tax was 549% pay, 549% pay, 720 at the rate of 18%. My input tax credit was 60, 67, 7 lakh, 6 lakh, 6 lakh and 7 lakh rupees. अब in simple words, मेरे पास I के लिए 20,000 का डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी जो है 7 लाख रुपीस में 20,000 का डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, बट मेरे पास C और S में एक्सेस क्रेडिट है विच आई कैन यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ IGST। But since rule 86B is applicable, तो मुझे 1% 5400 of 5,40,000, 5400 of SGST and 7,200 of IGST, total 18,000 कैश में पे करना मैंडेटरी है, even if I have sufficient credit to discharge my liability. So the important aspect is that when we are calculating the limit of 1%, when we are calculating the limits of 1%, we have to calculate them individually for CGST, SGST and IGST separately and segregately. सबको अलग अलग कैलकुलेट करना है, मैं कंबाइन करके नहीं कर सकता हूं। Another illustration. Same, my gross turnover was same, 60 and 40. Output tax 540, 540, 720. Now I have input of 5 lakh under CGST, 5 lakh under SGST and 720 under IGST. So in normal situation, IGST में I will not pay anything and I will pay 40/40 under C and S. Cash ledger से मैं 40/40 pay करता, effective payable would be 80,000 rupees. Effective payable would be 80,000 rupees. But since in this particular scenario, rule 86B is applicable, रूल 86B is applicable, मुझे IGST के अंदर भी मिनिमम कैश कितना पे करना होगा? 7,200. मुझे IGST में मिनिमम 1% पे करना होगा, दैट इज 7,200. तो मेरे पास टोटल क्रेडिट कितना था? 720. उसमें से अब कितना क्रेडिट बच जाएगा? 7,200. बट दिस क्रेडिट ऑफ 7,200 कैन नाउ बी एडजस्टेड
can now be adjusted with this 40,000 rupees. यहाँ पे मिनिमम कितना पे करना था? 5400. मेरे पास डेफिसिट कितना क्रिएट हो रहा था? 40. बट क्योंकि 86 भी एप्लीकेबल था, देन 7200 क्रेडिट वाज लाइंग इन माय आईजीएसटी अकाउंट, क्योंकि मैं 720 में से 72 कैश में पे करता, बैलेंस जो है वो मैं क्रेडिट से पे करता, मेरे आईजीएसटी में कितना क्रेडिट रह जाता? 72. आई कैन यूज दिस 7200, मैंने इक्वली ले लिया सी और एस के अंदर, इफेक्टिवली टोटल मैंने जो पे किया वो 80,000 ही किया. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट वंस the limit 86B is applicable, even then if there is a deficit amount, यानी इस केस में डेफिसिट था, तब कोई दिक्कत नहीं आती है, तब वो चाहे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करके वो सारी चीजें कंप्लाई कर लेंगे, सारी चीजें ऑफसेट हो जाएंगी. बट व्हेन यू हैव सफिशिएंट क्रेडिट्स, only then there is an additional cash outflow. If there is already a liability, तो सिर्फ हेड्स चेंज हो रहे हैं. यहाँ पे भी 80 ही पे करना था, यहाँ पे भी 80 ही पे कर रहा हूं, बस कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई. पहले सी और एस में 40 कर रहा था, अब कर रहा हूं सी में 36, एस में 36, आई में 72. टोटल इज 80,000 ओनली. सो इफ देयर इज अ लायबिलिटी, देन देयर इज नो इम्पैक्ट. इफ देयर इज अ एडिशनल क्रेडिट, देयर आर एक्सेस क्रेडिट, तो 1% का जो हिट है वो 86B एक्चुअल में हिट करता है. With this 86B I am closing. So again, just revising the entire concept. Applicable to all taxpayer except 5 categories. Monthly turnover less than 50 lakh rupees, or turnover in a month is less than 50 lakh rupees. Tax payment more than 1 lakh rupees for 2 consecutive years. Tax payment can be of the karta, partners, 2 partners, managing director or whole-time director. Thirdly, I have already claimed refunds with the GST department exceeding 1 lakh rupees in the preceding year. It should be the preceding year. Fourth, I have already paid taxes worth more than 1% of my turnover to date. April to date की जो turnover है उसके 1% से ज्यादा का already मैंने tax pay कर रखा है in cash. Lastly, मैं एक government unit to government body, statutory body, local authority और a PSU. In all these cases, 86B is not applicable. इसके बाद भी अगर किसी केस में 86B applicable होता है, the application can be filed with the commissioner to grant relief for 86B, and he may, subject to certain conditions and restriction, grant you this relief. Starting on with Rule 36.4. So since Rule 36.4 is already applicable since October 2019, I am not going into the integrities of the rule, but I will only touch upon the amendments to this rule. So this rule was introduced from 9th of October 2019. Up till that point, there was no restriction in claiming credits. मेरा जो credit मेरा books में आता था, I used to claim those credits. There was no restriction. From 9th of October to 31st December 2019, यानी within 3 months only, the condition was कि I can claim credit till 20%. 100 is appearing in my 2A, so I can claim 100 plus additional 20%. The limit was downgraded from 20% to 10% within 3 months, or the limit was changed to 10%. पहले 9 अक्टूबर तक कोई लिमिट ही नहीं थी. 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर के लिए 20% का ऑप्शन मिला, फिर पूरे 1 साल के लिए 10% का ऑप्शन मिला. Now the government was so considerate during the pandemic that they have revised this turnover. They have capped this amount to 5% instead of 0%. हम लोग ये दुखी हो रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 5% की कैपिंग कर दी है. Be happy they were going to get this to 0%. तो पैंडेमिक था, they have reduced it only to 5%. From 10 to 0 जाना था, 10 to 5 भी है. This is how we can interpret this. Otherwise, the way things are going, 0% is not very far away. I think maybe by April 2021, we can even see the 0%, that the amount appearing in your GSTR-2A or 2B should be the amount that you are eligible to claim the credits. Again, sir, Rule 86B भी challenge होगा, Rule 36.4 भी challenge होगा. Rule 86B, when I foresee there is an option given to you, yet you can file a letter with the commissioner and get a relief. So उसको struck down करना थोड़ा सा difficult रहेगा for the high court, because in every fit case you can approach the commissioner, and if he rejects, आप ट्रिब्यूनल चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, आपकी पूरी चेन खुल जाएगी on that order.
लेकिन रूल 36(4) के अंदर इट शुड बी स्ट्रक डाउन बाय द हाई कोर्ट्स बिकॉज देयर इज नो अदर मैकेनिज्म. वहां पे द गवर्नमेंट हैज इटसेल्फ गिवन अ मैकेनिज्म दैट यू कैन अप्रोच द कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम. बट इन रूल 36(4) देयर इज नो सच कंडीशन और नो सच ऑप्शन अवेलेबल. सर ठीक है, अब ये 20%, 10%, 5% तो समझ लगा कि इतना ही मिलेगा, ठीक है, वी हैव टू लिव विद दिस. नाउ द इश्यू अराइजेस 105% ऑफ विच अमाउंट रिफ्लेक्टिंग इन 2A और अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन 2B. मुझे 100 का 105 मिलेगा, लेकिन कौन सी फिगर पे, जो 2A में आ रही है या 2B में आ रही है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. For this, I have read this rule 36(4) 2 times and 3 times, and this is the exact extract of the rule. मैंने कोई वर्ड एडलेस नहीं किया, ये 36(4) का एक्सट्रैक्ट है. आई एम रीडिंग इट वर्बैटम फॉर एवरीवन. Input tax credit to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been furnished by the supplier. यानी जिसका क्रेडिट अभी तक फर्निश नहीं हुआ है, under subsection 1 of 37 in form GSTR-1 or using the IFF shall not exceed 5% of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes, the detail of which have been furnished by the supplier in 37(1). 37(1) basically talks about GSTR-1 and IFF, invoice furnishing facility, जो QRMP वालों को मिलेगी. यानी जो मैं GSTR-1 सबमिट कर रहा हूं, उससे जो फिगर अराइव होती है, उसके ऊपर आप एडिशनल 5% ले सकते हो. सर अब जो मैं GSTR-1 भर रहा हूं, उससे आपने दो हिस्से बना दिए, 2A और 2B. दोनों के अंदर फिगर अलग आती है. 2B स्टैग्नेंट है, 2A फ्लक्चुएटिंग है. मैं किसके ऊपर जाऊं? मैं 2A की फिगर पे जाऊं या 2B की फिगर के ऊपर जाऊं? So again, it is a big question mark. Should I take 105% of 2A or 105% of 2B? So for this, the only escape that I have seen in the entire picture is that form GSTR-2B give you a relaxation. This is the extract of the form GSTR-2B. GSTR-2B का जो फॉर्म है वही ये एक्सट्रैक्ट देता है. उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो ये रीड करती हैं. आई एम रीडिंग इट वर्बैटम अगेन. Form GSTR-2B is a statement which has been generated on the basis of the information furnished by your supplier in respective form 1, 5 and 6. So it is a form which is generated on the basis of GSTR-1, GSTR-5, GSTR-6. It is a static statement and will be made available once a month. तो एक फिक्स स्टेटमेंट है. एक बार पर्टिकुलर कट ऑफ डेट से 11 से लेके 10 तारीख तक का जो डाटा है वो इसमें आ जाएगा. उसके बाद कुछ भी चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, वो नेक्स्ट मंथ के 2B में आपको मिलेंगे. The documents filed by the supplier in any form 1, 5 and 6 would reflect in next open GSTR-2B. एक बारी 2B जनरेट हो गए, उसके बाद कुछ भी आप डाटा पंच करते हो वो नेक्स्ट 2B में इंपैक्ट डालेगा. Now are the important words. Taxpayers are advised to refer form GSTR-2B for availing credit in form 3B. So you are advised, not mandated. You are advised to refer form GSTR-2B for availing credit in 3B. However, in case of additional details, they may refer to their respective form GSTR-2A, which is updated on a near real-time basis for more details. So in GSTR-2B instruction, they have said it is an advisory form. You can use it to claim the credits, but in case there are additional credits in GSTR-2A, you can use those credits also. So again, हम तो वहीं पे आ गए. यानी यहाँ तो इन्होंने ओपन छोड़ दिया. 2B समझ लग रहा है तो 2B ले लो, वो 2A में ज्यादा आ रहा है तो 2A ले लो, अगली बारी 2B में ज्यादा आ रहा है तो 2B ले लो. So this is a mess now. For example, मेरा एक पर्टिकुलर क्रेडिट 2B में आज रिफ्लेक्ट कर रहा है. 2B में आज रिफ्लेक्ट कर रहा है. आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल. सितंबर के अंदर मैंने एक इनवॉइस रिपोर्ट किया, तो वो मेरे सितंबर मंथ के 2B में आ जाएगा. यानी जब मैं अक्टूबर में मैं रिटर्न फाइल करूंगा वहां नजर आ जाएगा. बट दैट इनवॉइस पर्टेन्स टू माय प्रीवियस ईयर. वो इनवॉइस मेरा प्रीवियस ईयर को पर्टेन करता है, प्रीवियस पीरियड को या अगस्त को पर्टेन करता है. तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन मेरा 2B में एक्सेस आ रहा है जबकि मेरा क्लेम कम है, तो मैं इसको भी प्ले कर सकता हूं. नाउ दिस इज एन ओपन एंडेड. यानी आप 2B और 2A को अपने एंड में प्ले करके क्रेडिट्स को ले सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट फॉलो वन ऑफ द प्रिंसिपल. ईदर टेक GSTR-2B और GSTR-2A. सर अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सूनर और लेटर वी विल बी फ्लडेड विद सो मेनी नोटिसेस. ईदर द हाई कोर्ट शुड शट डाउन द 36(4)
And if they do not shut down this rule 36.4, sooner or later, there will be so many issues. There will be so many, I mean, every chartered accountant or every tax professional will have multiple notices of mismatches. That amount in 2A and 2B was 100. You have claimed 110 over and above 105%. Kindly explain. Until the time it is not shut down, we can't offer any explanation also. Or we will have to fight up till the level of High Court that this is my genuine credit. How can you ask me to comply with the, how can you ask or bind me for the compliance of my supplier? All these explanations will be offered and accepted only at the level of tribunal or High Court. Departmental level, I see very rare possibility that they will understand this entire ambiguity. With this, I close my deliberation, and if in case we have any queries, any issues, we will be taking up those queries and issues. Just give me a second. First query is that refund order is sufficient to mean refund received. Yes, sir. Once the refund order is issued, it is equivalent to refund has been actually given to the company. So I don't see there should be any confusion with regard to this. The other issue is 1% in each act or consolidated. Sir, whenever we talk about GST, it is never consolidated. I, C, and S are never consolidated. These are three different acts which are being run together. तीन एक्ट्स हैं, तीनों की कंप्लायंस अलग है, जिनको चलाया साथ में जा रहा है. So 1% should be in each act, and that we have already discussed with the example also. If a company registered on 5 states, in 3 states turnover less than 50 lakh, but in 2 states more than 50 lakh. Sir, no worries. आपको उस पर्टिकुलर मंथ में अगर 50 लाख से नीचे उस पर्टिकुलर टर्नओवर के अंदर, then there should not be any concern. आपको ऊपर 49 or 86B should not be applicable. Sir is saying they have paid. Yet the promoter has paid more than 5. Sir, again, the word promoter is not given in Rule 86B. Either it should be the whole-time director or the managing director. If any of these two have paid more than 1 lakh rupees as taxes, then also there will not be any issue. Sir, I will share the PPT link in the comment section, so which can be generated after 1 hour of the session once it is complete. Another interesting question, is it applicable for GSTR-3B to be filed in January turnover? Rule 36.4 has been amended with effect from 1st of January 2021. तो 1st January के बाद मेरे को 5% पढ़ना है, या 86B की बात करूं तो 86B करना है. So 1st January से मेरे 86B और 36.4 applicable हो गए. Now the issue arises for all the returns due prior to 1st of January 2021. उसका क्या होगा? So in this, the government has a very simple practice that it is a procedural amendment. So जो procedure 1st January के बाद होगा, that is whether you are filing your GSTR-3B of August 2020, September, October, November, December, that will not make any difference. You will have to comply with the relevant provision. However, as a taxpayer, we will always say that this particular restriction was not available at that particular point in time. So there will be a conflict between the two, but the department will have an upper edge because they are on a stronger position. So the relief will be available again at appellate or a tribunal or a high court level. Another query is that if firm pays income tax more than 1 lakh but partners pays less than, so either the partnership firm or the partner, any one condition is satisfied, Rule 86B is not applicable. Another important question, issue, whether RCM payment will be considered or not in 1% cases.
my RCM payment is more than 1%. For example, my total turnover is say 1 crore rupees, and my liability, my reverse charge liability arises on 10 lakh rupees, and that 1,80,000 so I have to pay in cash only. So in that particular situation, whether Rule 86B will be applicable or not. So to be very honest, I will again have to go back to the rule and have to see what exactly it says. Just give me a second. I will see my PPT itself. It contains the definition. Sir, I think yes, it should be considered, because when we talk about reverse charge provision, it says that the liability to pay the taxes shift from वहां पे output tax in 86B they have written the word output tax. Now when we read the provisions of reverse charge, it says that the liability to pay the taxes have been shifted from the supplier to the recipient, and all the provisions of this act shall apply as if you are the supplier. So that becomes your output tax. और आपने अगर overall का 1% से ज़्यादा pay कर रखा है, तो to my understanding, this should be the sufficient compliance of Rule 86B. Sir, income tax include TDS? Yes, sir. The total tax payable, whether it is paid through TDS, self-assessment tax or advance tax, everything will be included in this particular amount. It is effectively the tax paid by you in any form, income tax. Another query is, can we say that I have taxable income in a year on which tax is payable, but due to accumulated losses, I did not pay tax? Will I pay? No, sir, it is very clear. Tax must have been paid. It should not be that क्योंकि मेरे unabsorbed losses और depreciation थे, उसकी वजह से I should be given a relief. Another important, good query is that I have foreign directors and they have paid more than 1 lakh rupees in the foreign country. So the rule specifically and categorically says income tax under the Income Tax Act 1961. That is with the Indian department and not the foreign government. Another issue is that whether 1% cash payment will also be payable to cess payment. Sir, as of now, I don't think so. Similar notification has been issued under the cess act, but since there is a corresponding provision, the buying provision is there in the cess act, so I think it should be applicable there also. But again, I will have to recheck whether it will be applicable or not. Cess. I was thinking to read it, but due to some preoccupation in the GST audit, I couldn't go through the cess act. So in my personal view, what I have read till date, it means that the cess act has borrowed all the provisions of the CGST act, including that of the tax payment. And this is a tax payment mechanism which has restricted the credit eligibility for a particular month. So according to me, this should be applicable on 1% also, cess also. Another issue by Manas sir is that TCS withheld in GST will also be counted in cash payment. So TCS withheld will not be counted because you can file a refund application. सर का इशू ये है, मेरा TDS डिडक्ट हो रहा है, TCS डिडक्ट हो रहा है, the amount is in my cash ledger. Merely the amount being in your cash ledger does not mean you have paid the taxes. You will actually have to take the amount from your cash ledger to the credit ledger, and only after that, liability ledger, only after that it can be said that you have paid GST in cash. So after adjustment, it will be available. Merely the amount reflecting in your cash ledgers due to TCS and TDS will not comply with the relevant condition. And I think, sir, I am done with most of the queries. In case any queries left, they can again text it. So I will try to cover it at the earliest. Thank you for your patience, sharing. Thank you.